आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सबसे पहले मैं प्रोफेसर डॉक्टर कैसर अब्बास साहब, वाइस चांसलर सरगोधा यूनिवर्सिटी, और डॉक्टर हारिस अज़ीज़ साहब, प्रिंसिपल इंजीनियरिंग कॉलेज सरगोधा, और तमाम फैकल्टी का, इंजीनियरिंग फैकल्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये कॉन्फ्रेंस अरेंज की है। और मैं अपने स्टूडेंट्स, बच्चों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए आए। तो कॉन्फ्रेंस या अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले आई हैव 2 क्वेश्चंस। जस्ट रेज योर हैंड्स इन रिप्लाई। हु वांट टू बिकम करोड़पति? ओके। सेकंड क्वेश्चन, हु वांट टू बिकम अ लीडर? थैंक्स। कॉन्फ्रेंस के एंड पे इन 2 पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे, इसलिए याद रखें इसको। द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज इंडस्ट्री एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि जमीअन मिन इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। And he has subjected to you whatever is in the heavens and whatever is on the earth. Indeed, in that are signs for people who think deeply. ये आयत जो है हमें गौर व फ़िक्र की दावत दे रही है, तो इसलिए हमने बड़े गौर व फ़िक्र के साथ बात को सुनना भी है, और कायनात के अंदर जो अल्लाह ताला ने बनाई है इस पे गौर व फ़िक्र भी करना है। नेक्स्ट। This is my brief introduction. It has already been done by the speaker. Next. Before we start, I will discuss, please, the role of cement on sustainable development. First, I will discuss only the role of cement on development. Then we will discuss what is the negative impact of industries and cement on sustainable development. And over there I will also explain what is sustainable development. Next. Who invented cement? Cement was first invented in 1824 in Leeds, England by Joseph Aspdin. Next. This was the first patent which he obtained in 1824. I want to express here that patent and registration is very important when you are going to start some new production. Later on, his son William Aspdin, he developed this kiln which worked in 1847 to 1850. This kiln was first installed in Britain, and it worked. And later on, through development, wet kiln process in which 35 to 36% water is added and slurry formation is carried out, and grinding is done in wet state. But the problem is that in this wet process, fuel consumption is very high. When the fuel cost increased, people started thinking of converting it to dry process. So dry process, initially long kilns were developed, but slowly the process developed to vertical preheaters. In preheaters, I would explain that in 20 seconds the material falls by gravity and calcination, which is the major fuel consumption. 60% fuel is lost in only calcination, but in 20 seconds the process completes calcination, and then in kiln the chemical formation and compound formation start. So the capacity of
wet process kilns used to be 500, 600 or maximum 1000 ton, but dry process now they started from 2000 and it has reached up to 12,000 ton capacity. Next. This is the company where I used to work in my last career, Sasam, Saudi White Cement. This was the parent company. Upper side is White Cement and lower side is Riyaz Cement Company. I worked here for 12 years. Then in 1990, HMC, our heavy mechanical complex, we had the capability in heavy mechanical complex that they used to work for manufacturing of cement plant and supply cement plants. They supplied one facto cement and some plant in southern area, but due to our bureaucratic behavior and delay in decision making, HMC could not get even a single order after 1990. But the Chinese company, they worked hard, they worked like a teamwork, and their leadership gave them a very good opportunity, and they have installed hundreds of plants all over the world. Next. So when first cement plant was installed in Saudi Arabia, 5,000 ton capacity, their president, Hu Jintao, he visited the Riyaz Cement Company. This is a photograph. And in background, our project director from Pakistan, Mr. Nasiruddin Siddiqui, was standing over there. And this is, I was sitting in the central control room before the arrival of president. Next. And whenever any minister used to visit Saudi Arabia, he must have visited Riyaz Cement Company because their president visited. In Chinese language and Arabic language is written that President of China visited this factory. Next. Cement brought evolution in human shelter from tents to concrete homes. Next, you can see. Next. Now we come to the cement data. In 2006-2007, 24 million tons of cement was sold, and that year 30.77% was increased from the previous year. And similarly, you can see next year there is slight growth going on. And in 2020-21, cement total sale was 48 million tons, and increase from the previous year is 20%. Right. Next. Now this data I am giving you for Saudi Arabia. In 2007, 27 million, and it was increasing slowly, 3%, 9%, 12%, and the highest figure is in 2015, 62 million. Next. This is the comparison of Pakistan cement and Saudi cement increase, how much increase every year. Why? Just wait, please. I want to explain here why there is so much difference in between Pakistan and Saudi Arabia in 2015 and 16. The reason was is that in 2005, the government announced 5 new cities, establishment of 5 new cities which were established and developed within 5 years. And a university, Noura University for Women, that was constructed. They planned to complete it within 2 years near Riyadh Airport, and they completed it within 2 years. This is why the cement. So I will just recall you Allama Iqbal Marhum, Mussolini of Italy,
उसने सुना अल्लामा इकबाल की जब शोहरत सुनी तो उसने खत लिखा अल्लामा साहब को कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। अल्लामा मरहूम ने कहा कि मैं लंदन आ रहा हूँ सेकंड गोल्ड मेज कॉन्फ्रेंस के लिए, तो लंदन आ जाओ। तो मैसूलिनी जो है वहाँ पहुँच गया तो अल्लामा इकबाल से पूछता है कि कोई मशरक़ की बातें बताएं। अल्लामा इकबाल मरहूम ने कहा कि हमारे पास फैमिलीज वैल्यू है, वी हैव जॉइंट फैमिली सिस्टम, वी हैव रेस्पेक्ट फॉर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स। लेकिन आपके यहाँ ये है कि ग्रैंड पेरेंट्स जब 7 साल से ऊपर हो जाते हैं उनको ओल्ड होम में भेज दिया जाता है, और बच्चे जब 18 साल या 16 साल के हो जाते हैं उनको कहा जाता है कि अपना कमाओ और अपना खाओ। लेकिन पाकिस्तान में फैमिली टाइज जो हैं बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। सुनता रहा। आखिर में करते हैं अल्लामा साहब कोई एक ऐसी बात बताएं। अल्लामा मरहूम ने फरमाया, बिल्ड कंस्ट्रक्ट न्यू सिटी, डू नॉट एक्सपेंड बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट, डू नॉट एक्सटेंड सिटी पॉपुलेशन एंड एरिया बियॉन्ड सर्टेन लिमिट्स। ये बात थोड़ी देर गौर करने के बाद ही स्टूड अप एंड सैल्यूटेड अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। व्हाई दिस वाज टोल्ड, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400-1500 साल पहले ही बता दिया था कि इस तरह आज देख रहे हम कराची, लाहौर, इन शहरों को एक्सपेंड करते जा रहे हैं। सरगोधा शहर का हाल देख ले कि हमने इसको क्या बना दिया है। वरना आज से 40-50 साल पहले जब जिस शहर बना था, इसकी रोड, इसके चौक और ये कितने बाइक और किस तरीके से प्लान करके बनाए गए थे। लेकिन अब इसका क्या आशर हो रहा है, सिर्फ इसलिए कि हमने नया शहर आबाद नहीं किया। Next. Now we come to world cement statistics. From this data, it is obvious that China in 2015 had 51 point something, more than 50% of the cement was consumed in China. Why China developed so much? This data shows. And similarly, Pakistan and Saudi Arabia had 1.3-1.2% of the total world cement consumption. Next. So this is the per capita consumption. In population wise, per capita, how much cement was consumed? Saudi Arabia was the number one, 1.6 ton. Saudi Arabia had number one, 1.6 ton per person. Pakistan at that time it was 120 kilogram, which has reached up to 212 kilogram. Next, this per capita also shows how much is the development. Now we come to sustainable development. What is sustainable development? Now everybody will agree that cement had some contribution in development. Yes. But on sustainable development, we will see economic development that is achieved without depletion of natural resources. नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरीके से हमने डेवलप किया है। फॉर एग्जांपल सुई गैस के कितने रिजर्व थे हमारे पास। हमने CNG स्टेशन लगा के गाड़ियों में उसको फूक दिया है, घरों में जला के फूक दिया है। हालांकि हमारे पास अल्टरनेट फ्यूल थे जिनको हम यूज़ करके गैस को बचा सकते थे और उससे अच्छे प्रोडक्ट्स बना सकते थे, लेकिन हमने नहीं बनाए। Sustainable development is also development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their needs. देखना यह है कि हम अपनी ज़रूरतों को किस तरीके से संभाल के और इकोनॉमिकली इस्तेमाल करें ताकि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं उनके लिए अच्छे मौके दे के जाएं। There are 3 pillars of sustainable development. सोशल इक्वालिटी, गरीब अमीर की जो कहते हैं तमीज़ कम की जाए। लेकिन अफसोस कि हमने इतना ज़्यादा कैपिटलिस्ट निज़ाम को हमने इतना ऊपर ले गए हैं कि गरीब अमीर में तमीज़ बढ़ती जा रही है। इकोनॉमिक वायबिलिटी और तीसरा है कि एनवायरनमेंट वेरिएबल। एनवायरनमेंट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इस सस्टेनेबिलिटी में कि
environment जो है उस पर कितना इम्पैक्ट हो रहा है, दैट वी विल डिस्कस टुडे आफ्टर दिस। कि एनवायरनमेंट पे इंडस्ट्री का क्या इम्पैक्ट हुआ है, हमारी ट्रांसपोर्ट का क्या इम्पैक्ट हुआ है, हमारी जो जनरेशन है इलेक्ट्रिसिटी की उसके क्या इम्पैक्ट हुए हैं, दैट वी विल स्टडी इन नेक्स्ट स्लाइड्स। यस, impact of cement industry on environment. Production of 1 ton of cement causes approximately 0.8 to 0.9 tons of carbon dioxide. So Pakistan capacity is 69 million tons. So it will generate 59 to 55 to 62 million tons of carbon dioxide. This is only one industry. And think about other refineries and transport and power generation generated from furnace side and carbon, how much carbon dioxide, and more if we deeply study our brick kilns in construction industry. Brick kilns are not only emitting carbon dioxide, those are emitting carbon mono as well as carbon particles, which are the cause of smoke formation. Next. Now we have to think deeply how to reduce this carbon dioxide. Production of additive cement like pozzolana, slag, fly ash and plastic cement. For example, we are using ordinary Portland cement for construction, but when we go for plastering of interior, such high strength cement is not required. So plastic cement is produced by adding 25 to 30% limestone. So we should have separate specification. Alhamdulillah, this has already been started in Pakistan. So in plastering, we should use this plastic cement. Then in a world, this pozzolana cement is very common, which has better qualities than ordinary Portland cement. And natural pozzolana is available in Saudi Arabia and so many other countries. But Pakistan, we have to search, and universities should come forward, industry and universities should join hands to search the availability of pozzolana, and if available, this 25 to 30% pozzolana can be added, and which will improve the quality of cement also. Then other product is aerated and autoclave concrete. For example, we are constructing our houses and buildings with using ordinary red whale bricks. I have already explained the impact of those bricks kiln. But if we use this concrete, I will explain in the next slide what is aerated and autoclave concrete panels, how we can save this environment by using this. Similarly, production of new products from carbon dioxide, we should think of that also. We should study to make some positive use of carbon dioxide, which is emitting from the cement industry. Research on alternate binding materials, alternate method of cement production, and use of alternate materials, raw materials. And next. Then burning of urban, industrial, and agriculture waste. This technology is since 1990 in world. Cement industry is common that urban waste is being fired in the pre-calciner of kiln industry, that I will explain later on. So if we use 10% alternate fuel in our cement industry, we can save approximately 10 to 15 billion per annum in fuel cost. So research projects on energy conservation, for example, in industry, housing and transport. For example, in Saudi Arabia, there is one department, Saudi Energy Efficiency Center. And one prince is the head of that department. And they are monitoring all industry, transport and housing. And they are suggesting, they are not only monitoring or controlling, they are suggesting the good suggestions how to reduce the electricity consumption. So similar departments should be developed in Pakistan also. What is aerated and autoclave concrete? Just we expressed before.
Aerated and autoclave is a porous concrete product manufactured from sand, lime, cement, foaming agent, and water. There is 80% sand, which is in abundance Pakistan available. So it's only 10% cement and then 10% additive material like limestone or fire clay or anything we can add, and then foaming agent. Process consists of mixing, grinding, foaming, casting, curing, high pressure autoclaving, and cutting to required size. Next. Its density is low, its thermal conductivity is low, so it will be lightweight, and then heat transfer will be reduced. So our heating and cooling system will be, efficiency will improve by installing this. But one thing I would like to explain, that it has not the load bearing capacity. So beams, columns, we have and foundations we have to construct from the concrete, but all partition walls, exterior walls, and roofing we can make with this material. Next. This is some uses of this AAC panels and blocks. This is some installation procedure is also given. This is a building installed with the AAC panels and blocks. Next. This we can instead of ordinary beams and columns, RCC beam and columns, we can construct it with steel columns and beams also. But proper design should be made. And another benefit of this aerated and autoclave concrete is that the load bearing capacity will reduce because of the low weight of this AAC. So in design it will be worked out according to the load of this AAC. Then another problem, great problem, is waste, solid waste. Solid waste management is one of the biggest problem of challenge to achieve sustainable development. By adopting proper solid waste management system, we cannot only overcome the production, rather we can save billion rupees by recycling plastics, paper, board, metals and glass, etc. We can also produce biofertilizer from chicken waste. And this urban waste, agriculture waste, and industrial waste can also be burned in cement industry. Next. This is a story of Sargodha, Faisalabad Road. The canal which is passing through the city, crossing Satellite Town and all Faisalabad Road. In front of Eagle City, you can see this, people are throwing garbage over there. I contacted so many departments, commissioner, DC, sent them mails, but no effect. Then I saw one day 2-3 laborers, they are working every day and they are removing plastic bags and garbage from this small canal and they are throwing out. I asked them, why don't you remove it and take it away? They said, we don't have. Then I contacted their chief engineer. His secretary told, you should consult some joint secretary or some junior person. I contacted him. He said, it's not my area. This is the name, and other person, you contact him. I contacted him also. But there was no result. Then I requested one our developer who is developing to depute his tractor and trolley to remove this material periodically, because people continue throwing over here. So we have to exert efforts to get results. Now the condition is better because periodically it is cleaned. And next. At least in our town where I am living, we have made a system that a person who is taking 300 rupees per house per month, he is taking this all garbage from home
and transporting to such place where he segregate all the garbage and then send to recycle industry. For example, plastic bags to plastic industry, paper and board to paper industry, and similarly glass and other steel material to concern, and remaining they throw to Shahinabad. But this is not a solution. Solution is that we have to burn this as alternate fuel in cement industry. After recycling of the recycling material. Next slide will show you the international cement industry, how much they are using this alternate fuel. And then some adverse impact on the atmosphere. Next. You can see green is the ordinary fuel which we are using in our cement industry, and this orange color is the alternate fuel which is gradually increasing in world. Some Pakistani factories have, or one or two have also started, but we should work on this effectively, and similarly we should make some research work on this, how to prepare alternate fuel, proper alternate fuel to use it in cement industry. Next. These are some negative impact of how we are wasting our soil by throwing garbage on the. We are polluting our canals, and similarly our sewage system is being blocked by the plastic bags. One day I saw one person, he was traveling in a Corolla car, and he stopped in front of a house and threw a garbage bag in front of some house. Instead of giving 300 rupees, and that was a town where this system was properly adopted to collect every day. He saved his 300 rupees but threw it in front of some other house. So we should think deeply and improve ourselves. These are some positive use of, for example, we can use our kitchen waste to make biofertilizer. Similarly, this poultry waste and some other waste that can be utilized for fermentation tank to manufacture biofertilizer. That is not a costly project within few crores, but some industries should come forward to start manufacturing of these industries, these products, biofertilizers. Next. Similarly, these plastic bags we can use in repair of our roads. Next. This is glass tempering unit Sargodha. When we are talking about the construction of buildings with alternate material, first proposal was to reduce cement consumption with additives, use of additives. Then second was aerated AAC panels and blocks, the use of partition walls. Then third is this glass. Glass is manufactured from silica sand, which is available in Pakistan in abundance. We have only 2 plants of 1,000 ton capacity each, and we can install unlimited plants from Pakistan and can supply all over the world. And only sand and soda ash. For soda ash also the raw material is available, salt, which is in abundance in Pakistan. So this is glass tempering unit Sargodha. This is the largest unit in Pakistan. Up 22 by 10 feet glass, if available, can be tempered in this factory. This is a mosque built by glass, constructed by glass. All walls are made of glass. You will say that in summer season it will be very hot. No, it's not hot. Why it's not hot? Because
there is 5 millimeter gap between two glass sheets. Glass has been tempered to make it safety glass, so if it is broken, it will be safe, it will not, that I will explain in next slide. So glass can also be used in partition walls and constructing. Next. So this is a ordinary glass. If it is broken, this is dangerous and hazard for the human being. But the safety glass or tempered glass, this is safe because it will convert into small pieces when it will break. And the strength of this glass is 5 times more than the annealed or ordinary glass. So these are some business development and business opening, that there are so many products which we can make from glass. For example, this is glass lamination. 2 sheets of glass, after tempering, those have been laminated with a plastic sheet on which some beautiful scenery has been drawn and printed. And next. Apart from this glass, there are so many designing which can be made on glass to make it decorative. For example, on floor we are using tiles, and sometimes we use stone. But in stone, the structure or design is not similar. But in glass, we can build up the structure of marble design on glass. Next. This is approach road going to industrial area of Sargodha. The drainage system is blocked, and the main road in dry. This is the picture of dry season. I sent this picture to the then minister, but with no response. I contacted the office. They said we have limitation. We cannot spend money. We can spend money when boom is paid. What is boom? Board of Management. So last month they said that we have made the complete program and estimation and sent to head office to MD for approval. They said no, you cannot spend this money until this board of management is made from the industrialist. So what happened next? They said, why you are not making this board of management? The reason was that for board of management they need some qualified people, at least 100 who are metric or higher education, but 100 people were not available. Then they exempted this class. Okay, education is not a problem, you make board of management, but up till now. Then what I did, last few months back, I put some stone and material on this road, and that was level. That worked for 4-5 months, but again the condition is same. So yesterday I saw some other industrialists throw some stone over there, and efforts are going on to make it proper road. Next. Then the next is the energy. Energy, most of the plants in Pakistan are tidal, are fuel based, and the fuel based are from furnace oil or coal. Those plants are also emitting carbon dioxide. In order to reduce that carbon dioxide emission, we have to implement this solar energy system. So if we add 10,000 megawatt per annum solar system in our housing, our commercial buildings, in our industry, we can save 12.5 million tons of carbon dioxide per year for the first year. And similarly, if we add every year, it will go on reducing the carbon dioxide emission. But how much is the cost of this 10,000 megawatt? It will cost about 1 trillion rupees. 1 trillion rupees. 10 crore रुपया. उसके लिए alternate proposal is that we should start manufacturing of solar panel in Pakistan. इसके लिए कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है. So I would request University of Sargodha Engineering College to come forward for research work with
Medina glass processing to start manufacturing of solar panels in Pakistan, because only glass is used and cells are used, and glass problem is that in existing plants, glass 2 millimeter thick or 3 millimeter thick glass cannot be tempered. So to maintain the quality of glass of 2 millimeter to 3 millimeter, which is used in manufacturing of solar panels, we are going to import a small furnace which will reach within 3 months, inshallah. Then we have to start working on this. These are some calculations for which I gave the data. Next. So AM Global Energy is a joint venture of AMG Auto Engineering Services and GP Energy, involved in the installation of industrial, commercial and domestic solar. And we can work on 10 megawatt to 500 megawatt per annum solar system to install in Pakistan, to produce in Pakistan. Next. Then our transport, that is also petrol, diesel, also emitting carbon dioxide continuously. So we have to think of converting our bikes and automobiles, cars, buses to electric. So alhamdulillah, this electric bikes and these are being assembled in Pakistan, in Lahore and Faisalabad and some Karachi. So next. 1 year before, I just started searching of some supplier for these electric bikes and electric cars from China. So electric bikes and car tricycles were available in abundance, but I found some problem in finding out the car with right hand steering. Next step. Because most of the countries, they have left hand steering, and China also, they are assembling cars with left hand steering. So ultimately I found some cars which are right hand, but I checked from the clearing agent Karachi that how much is the duties and taxes to be paid when I import these cars. They said 30% duty will be charged. So I immediately asked for the quotation. When I received quotation and sent to clearing agent, he said, sorry, no, it has been banned. All the electric cars have been banned to import in Pakistan. Why these were banned? When I made some research and investigations, I came to know that people starting importing luxury cars of 2 crores, 3 crores of this price, Tesla and different companies, and nobody imported, maybe few persons imported these public cars, and then 1 year it remained banned. Now it has been banned, has been uplifted, but duty has been increased up to 100%. So the car which will reach Karachi in 20 lakhs, now 45 to 50 lakhs, it will be very difficult to afford that car. So I am trying and struggling for that also, that these cars should come here. Not only come here, I am also trying for the assembly plant to be installed in Sargodha, inshallah. Next. This is rain harvesting system, rainwater harvesting system. This is a very simple project which can be started from our home. I started from my home. What is this? The rainwater which is falling on roofs and floors, we have to collect it and divert it to a small tank. This green pipe is some other water board, so you should not consider it. Only the vertical pipe on which there is some small screen, that is the 40 feet deep, where from we pump out water, and there are 12 holes on the surrounding of that pipe, about 3 by 8 inch. And then one screen is put on that, all rainwater comes to this tank, and through those small
holes, water penetrate to underground streams which are flowing naturally, God gifted. And then when rainfall heavily, then this tank is full, then that screen also passes rainwater. So what are the benefits of this? Benefit of this is that underground water will become drinking, to TDS will reduce and it will become drinkable. And Sargodha having a very big problem that we don't have drinking water in underground water, so we should utilize this to make our water sweet. Next. And this is not only useful for our domestic purpose. If we increase the level to our roads, then the biggest benefit will be that our sewerage system, which is blocked with plastic bags, when rainwater will go to underground. And one thing I should explain here, that it has not been shown in that picture. We have to put some sieving stone, small stone, 1/4 inch or less, so that water goes after sieving through that stone. So our sewerage system will also improve, because that sewerage system has been designed only for sewage water. But when we will use rainwater to penetrate to underground streams, then it will benefit in our saving our drainage system. And if we go on bigger level, country level, then आपने सुना होगा कि बलूचिस्तान के अंदर जब सैलाब आया था, तो एक बहुत बड़ा सैलाबी रेला एक गांव की तरफ आ रहा था. क्या हुआ, लोगों ने मस्जिद में जाके दुआएं मांगना शुरू कर दी. तो अल्लाह ताला ने वो सामने एक आ रहा है रेला 20-25 फुट का, अल्लाह ताला ने 2 किलोमीटर ज़मीन को फाड़ दिया और वो पानी जो है ज़मीन के अंदर चला गया और वो गांव वाले बच गए. तो ये एक निशानियाँ हैं जो अल्लाह ताला दिखाता है. और वो जो मैंने पहले शुरू में आयत पढ़ी थी, गौर व फिक्र करो, अगर हम गौर व फिक्र करें तो वो पानी जो इस तरीके से हर साल सैलाब आते हैं और खरबों रुपए का नुकसान और फसलों को और ज़मीनों को तबाह कर देते हैं, अगर हम बड़े बड़े पाइप्स डिज़ाइन करके सिविल इंजीनियर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर ज़मीन में डाल दें जहाँ से इस तरह सैलाब का पानी आता हो, तो वो पानी जो है, ये मेरी तजवीज़ है, इस पर फर्दर स्टडी की ज़रूरत है. तो इस तरीके से सैलाब के नुकसानात से भी बचा जा सकता है. और प्लस हमारे दरिया जो हैं, इस तरह के जो पाकिस्तान के अंदर दरिया हैं, पानी फ्लो कर रहा है बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे, ये मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा. जिस तरह बड़ी बड़ी कैनाल्स होती हैं, इस तरह दजला और फरात भी बह रहे हैं. तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हमारे 72% लोग जो अनएम्प्लॉयड हैं उनको यूटिलाइज करके और अब मशीनरी लगा के जो गुजर गए हैं उनको बेहतर किया जाए. और इस सबसे बढ़कर जो इसका सोल्यूशन जो है वो हाइडल पावर स्टेशन लगाए जाए, डैम्स बनाए जाए. नेक्स्ट, इसमें स्टोन डालना है ताकि सेक्टरों से पानी जाए. जी सर, इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, मतलब अगर आप डोमेस्टिक पर्पस, डोमेस्टिक 15-20 हज़ार रुपये. सो मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ अपने गोल बनाए थे और अब भी हैं, तो इसी तरह आपके साथ भी शेयर करता हूँ. आप भी इन गोल्स को लेके चलें. मेक अवर कंट्री पेट्रोल फ्री इकोनॉमी बाई ईयर 2030. कैसे बनाना है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन जब इंसान मुसम्मम इरादा हो तो फिर बड़े बड़े मुश्किल मराहिल तय हो जाते हैं. नेक्स्ट, स्टार्ट असेंबली प्लांट्स फॉर इलेक्ट्रिक बाइक्स, रिक्शा, कार्स, बसेज एंड ट्रक्स. अप टू द एक्सटेंट ऑफ rickshaw and bikes, this have already started, and we have to focus on buses and trucks also. Start conversion of existing cars, bikes, etc.
to electric system. And we have to make research how our existing bikes and cars can also be converted to electric. Stop manufacturing of petrol, diesel automobiles by 2025. Make effective utilization of our resources, 72% barren and uncultivated land to be cultivated through 12% unemployed work population. अच्छा, वो जो मैंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का बताया था उसमें मुझे याद आ गया, एक चीज़ मेरा भूल गया। उसमें अगर जो सिस्टम हमने अपने टाउन में डेवलप की है क्लीनिंग की एंड कलेक्शन ऑफ गार्बेज, वो अगर पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट कर दी जाए तो उससे 4 लाख टनों को रोजगार मिलता है। और इसी तरह 72% अनकल्टिवेटेड लैंड जो है उसको अगर यूटिलाइज किया जाए तो कितने जॉब्स निकल सकते हैं। और ये 12% वो अनएम्प्लॉयड जो गूगल पे डाटा आ रहा है, लेकिन एम्प्लॉयड पीपल से मैंने जब कैलकुलेट किया तो बच्चे बड़े बूढ़े सारे जो अनएम्प्लॉयड हैं या जो उनको हम यूटिलाइज नहीं कर रहे या ख्वातीन हैं, उनको अगर मिलाया जाए तो 72% उस फिगर के साथ बिल्कुल मिलती है। अगर एम्प्लॉयड टोटल पॉपुलेशन में से एम्प्लॉयड निकाल दें तो इसलिए वी हैव टू यूटिलाइज अवर मैन पावर। Then install 10,000 megawatt solar projects every year. Install solar system in all schools, colleges, universities and mosques by 2025 to eliminate their energy bills. मैंने घर में ये स्टार्ट किया था, 2 साल पहले 5 किलोवाट इंस्टॉल किया, एनर्जी बिल रिड्यूस हुआ। लास्ट ईयर 5 किलोवाट और ऐड किया, मज़ीद रिड्यूस हो गया। अब 5 किलोवाट इस साल ऐड किया है, 15 किलोवाट से मेरा एनर्जी बिल ज़ीरो और माइनस में चला गया। आप कहेंगे कि पत्नी हर बंदा कहाँ अफोर्ड कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। एवरीबॉडी कैन अफोर्ड। ए फैमिली हु इज लिविंग इन सिंगल रूम, और बापला से उन्होंने पता किया तो पता चला कि देयर इज नो ट्रांसफार्मर नियर बाय देयर हाउस। दे इंस्टॉल्ड 1 पैनल और उनका पंखा भी चल रहा है। एक पैनल से 20-25 हज़ार रुपया खर्चा आया, उनका पंखा भी चल रहा है और उनकी लाइट भी चल रही है। मेक अवर कंट्री डेट फ्री इकोनॉमी बाय 2030। दीज आर माय गोल्स, यू शुड आल्सो ज्वाइन एंड मेक योर गोल्स टू अचीव दीज गोल्स। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में इरशाद फरमाते हैं, और इरशाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त व इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत व इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत व इलल अर्दि कैफ़ सुतिहत। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने ऊँट को नहीं देखा? यानी खिताब तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, लेकिन पूरी उम्मत के लिए ये मशाअरा है। क्या आपने ऊँट को नहीं देखा कि किस तरीके से वो उसमें कितनी पेशेंस और किस तरह बगैर खाए पिए भी मीलों का सफ़र वो तय कर देता है, कैसा उसको बनाया गया। और आसमान की तरफ देखिए कितना बुलंद, यानी आपके इरादे आसमान की तरह बुलंद होने चाहिए। और पहाड़ को नहीं देखा किस तरीके से उसको नस्ब कर दिया गया है, इस तरह मुसम्मम इरादे होने चाहिए। और जब दूसरों के साथ लेन देन के और दूसरों के पास दावत दी जाए, मैसेज लेके जाएं, तो उस वक़्त जिस तरह ज़मीन बिछ जाती है, इसके ऊपर लोग अकड़ के भी चलते हैं लेकिन फिर भी वो बिछती चली जाती है। इस तरीके से अपने अखलाक को डेवलप करें। और ये मैं जो क्लीनिंग की बात कर रहा था, ये क्लीनिंग का सबक मुझे कहाँ से, ये जद्दा सी पोर्ट से मुझे मिला है। वो आप कहेंगे वो कैसे? मैं एक दिन एक कॉन्फ्रेंस थी जद्दा में, वहाँ गया तो मेरे साथ एक सऊदी सुपरवाइज़र जो था वो मेरे साथ था। तो ऐसे ही साहिल समुंदर पे चलते चलते वो बिल्कुल आगे साहिल के करीब ले गया। जाते हुए उसने कोई रास्ते में कोई चीज़, कोई बिस्किट वगैरह या कोई चॉकलेट वगैरह खरीद ली, चलो वहाँ जाके खा के मैंने वहाँ सी पोर्ट पे, हमारे पाकिस्तान की तरह नहीं बल्कि सी पोर्ट पे जगह जगह वेस्ट गार्बेज ड्रम्स पड़े होते। तो वहाँ पे बिल्कुल जब किनारे पे पहुँच गए वहाँ कोई नहीं था, वो छोटा सा रैपर था। मैंने
इधर उधर देखा, कोई चीज़ नहीं है, मेहमान फेंक दिया। उसने चुपके से वो उठाया, मुझे कुछ नहीं कहा, उसने उठा के गाड़ी में ला के रख दिया। जब वापस पहुँचे तो उसने उसको गार्बेज बॉक्स में डाल दिया। तो उसने मुझे एक लेसन दे दिया, जिस लेसन को लेकर अब ये मैं एफर्ट कर रहा हूँ कि हम भी अपने मुल्क को नीट, क्लीन, ग्रीन एंड सेफ बना लें। और सेफ्टी, मेरे अलग अलग लेक्चर्स हैं, हाउ टू मेक अवर कंट्री नीट, क्लीन, ग्रीन एंड सेफ। क्योंकि सेफ्टी ऐसी चीज़ है, दुनिया के अंदर सेफ्टी फर्स्ट ये स्लोगन है। जब भी किसी इंडस्ट्री के अंदर या भी किसी इदारे के अंदर जाते हैं, सबसे पहले वो सेफ्टी का एक लेक्चर देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये यूनिवर्सिटी रोड पे देख लें ट्रैफिक का हाल। मैं जब ट्रैवल करता हूँ तो 2 आंखें तो क्या 10 आंखें भी हों तो शायद वो काफ़ी ना हों कि चारों तरफ से रक्शे और बाइक्स आ रहे हैं। इसकी वजह क्या है कि हमने ना खुद ट्रेनिंग हासिल की है, ना बच्चों को ट्रेनिंग दी है। तो इसलिए सेफ्टी पे ट्रेनिंग जो है बहुत ज़रूरी है। मेरा एक लेक्चर है डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट। वो डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट ये है कि जितनी भी डिज़ास्टर्स, चाहे वो आसमानी आफतें आती हैं या आग लगती है या इंसानी गलतियों की वजह से होती हैं, उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लिए जाते हैं। तो वो लेक्चर बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर किसी वक्त टाइम हो तो इंशाल्लाह फिर देन वी विल डिस्कस नेक्स्ट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बात हो रही थी, उसके गोल्स ये यहाँ मैंने 17 गोल्स। देयर वाज ए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस held last year in Law University of Health Sciences। उसका टॉपिक भी ये था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। उसके लिए मुझे पता चला कि भाई इस तरह हेल्थ यूनिवर्सिटी में हो रही है, तो मैंने भी अपना पेपर भेज दिया। तो उन्होंने मुझे कॉल कर दिया, लेकिन अनलकीली जाने से 1 हफ्ता पहले मुझे बैक पेन शुरू हो गई, जिस वजह से मैं ट्रैवल नहीं कर सकता था। तो मैंने माजरत की, भाई उनसे रिक्वेस्ट की, भाई मैं नहीं आ सकता। लेकिन उन्होंने कहा जी नहीं, इस तरह ना आने की जो है इसको आप ऐसे करें, लेक्चर को आप रिकॉर्ड करके हमें भेज दें। तो वो रिकॉर्ड करके मैंने उनको भेज दिया। तो कहने का मकसद यह है कि वो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है, आपको सुनना चाहे यू कैन लिसन दैट। नेक्स्ट, इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू इंडस्ट्री। ये एक बड़ा अहम टॉपिक है कि हम अपनी नई इंडस्ट्री को, अगर सीमेंट इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो सीमेंट इंडस्ट्री लगाते चले जा रहे हैं, और उसका इफेक्ट क्या हुआ है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन बढ़ रही है, और दूसरा उसका एडवर्स इफेक्ट ये हो रहा है कि सीमेंट की डिमांड इतनी नहीं है। अब आपने देखा होगा कि 69 मिलियन टन अगर इंस्टॉल कैपेसिटी है, तो उसमें से 42 और 50 मिलियन टन जो है सीमेंट सेल रहा है। इसकी वजह हमें सोचना है, ये देखें ग्लास इंडस्ट्री, फ्लोर ग्लास सिर्फ 2000 टन पर डे प्रोडक्शन हो रहा है। वी शुड इंक्रीज सच इंडस्ट्री फॉर विच रॉ मटेरियल इज अवेलेबल। सिमिलरली द सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री दैट कैन बी इंस्टॉल्ड if we install refractive bricks. Refractive bricks is a big consumption. If we install in Pakistan, we can save 6 to 10 billion rupees per annum. Next. मैंने शुरू में एक क्वेश्चन किया था, लीडर बनना कौन चाहता है। उसके लिए ये अल्लामा इकबाल का कुछ अशार में पढ़ देता हूँ। मंजिल है आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियाँ गुजर गईं, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर, ईमान तेरा लुट गया रहज़न के हाथों से, ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर, हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, इस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर, करे सवार ऊंट पे अपने गुलाम को, पैदल ही खुद चले जो वो आका तलाश कर। टेक होम मैसेज फॉर ऑल ऑफ अस, सेव दिस प्लेनेट अर्थ फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग, मेक इट नीट, क्लीन, ग्रीन एंड सेफ फॉर आवर सेल्व्स, आवर फैमिलीज, आवर नेशन, आवर फ्यूचर जनरेशंस,
and all humanity. Because the message from our Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, "At-tahuru shatrul iman," सफाई निस्फ ईमान है. Thanks for your attention. Thank you so much, sir, for your quality time. It was indeed a great presentation. Now, time for question and answer session. I request worthy chief guests to please remain on the stage to answer any of the query from dear students.